Dear friends, I welcome you to the multiple choice question solution segment associated with the 12th lecture of the lesson Rotational Dynamics. चलिए शुरू करते हैं इस पहले फिजिक्स लेसन के 10 सवालों के जवाबों का सिलसिला. फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ गायरेशन इज रिलेटेड टू डैश. रेडियस ऑफ गायरेशन किसके संबंध में है? रेडियस ऑफ गायरेशन इज I, which is equal to mk square. It is associated with what? It is associated with moment of inertia. The answer of the first question therefore is D, fourth option. It is associated with moment of inertia, that is D, fourth option. Second question, the radius of gyration of a body depends upon dash. K किसके ऊपर निर्भर करता है? So the answer is it depends upon the axis of rotation, क्योंकि हर axis of rotation के लिए K अलग अलग आएगा, and distribution of mass about that axis of rotation. Therefore the answer is axis of rotation and distribution of mass about the axis of rotation. The answer is C, third option. The answer is C, third option. तीसरा सवाल, what are the dimensions of radius of gyration? The dimensions of radius of gyration ऊपर substitute कर रहा हूँ. The dimensions of I, m1 L2 T0 is equal to m1 and k square. So this gets cancelled. L raised to the power 2 is k raised to the power 2, and the dimensions of k are L raised to the power 1. L raised to the power 1. The answer is B, second option. The answer is B, second option. Question number 4. क्या है चौथा सवाल? ध्यान से समझिएगा उसको. The angular acceleration, right? Question number 4. The angular acceleration of a body of mass 50 kg, mass 50 kg, under the action of a torque of magnitude 500 Newton meter, torque is equal to 500 Newton meter, is 25 rads per sec square, is 25 rads per sec square. They are asking us to find out the value of K. So torque is equal to I into alpha, which is equal to mk square into alpha. Therefore k square will be equal to torque upon m into alpha. K will be equal to square root of torque upon m into alpha, that is square root of how much is torque? 500 upon mass is 50 and alpha is 25. चलिए बात करते हैं क्या आंसर आएगा उसके बारे में. It is 500 upon 50 upon 25 का root, and the answer is 0.6 meter. The answer is 0.6 meter. कौन सा जवाब है 0.6 मीटर? It is B, second option. It is B, second option. चलिए बात करते हैं पांचवें सवाल की. फिफ्थ क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? A flywheel of mass 4 kg, mass of the flywheel is 4 kg, okay, has moment of inertia 16, moment of inertia 16 kg meter square, has moment of inertia 16 kg meter square. What is the radius of gyration? How much is the value of K? So I is equal to mk square, K is equal to square root of I upon m, that is square root of 16 upon 4, that is 2 meter, is the radius of gyration, and therefore the answer of the fifth question is B, second option. छठा सवाल, sixth question, क्या है? तो सवाल है, when a body starts to roll, rolling is a combination of translational motion and rotational motion. When a body starts to roll on an inclined plane, its potential energy is converted into dash.
the potential energy is it converted into rotational kinetic energy? Yes. तो A है क्या ऑप्शन? नहीं, B भी पढ़ लो. Is it converted into translational kinetic energy? Yes. Therefore the answer is C, both A and B. Question number 6, the answer is C, both A and B. सातवां सवाल, what is the rolling kinetic energy? Kinetic energy rolling is equal to kinetic energy translational plus kinetic energy rotational, that is half of mv square plus half of I omega square. Half of mv square plus half of I omega square. सही जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन. सही जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन. चलिए बात करते हैं आठवें सवाल की. A loop of mass m and radius r, loop is a ring, is rolling. What is the total kinetic energy? Okay, kinetic energy rolling is equal to half of I omega square plus half of mv square. हाफ ऑफ किसके टर्म्स में चाहिए रे मुझे? मास और वेलोसिटी के. सो आई के जगह मैं लिख रहा हूं एम आर स्क्वायर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो सेंट्रल एक्सिस होता है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, दैट इज हाफ ऑफ एम इंटू आर ओमेगा द होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. दिस इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर plus half of mv square. The answer is mv square. The answer is mv square. है क्या? देखो. Yes. The answer is C, third option. The answer is C, third option. नवा सवाल, नाइन्थ क्वेश्चन. क्या है देखते हैं. किधर गया भाई नाइन्थ क्वेश्चन? हाँ, मिल गया. क्वेश्चन नंबर 9. If a circular loop of wire of mass m and radius r, mass m and radius r, makes n revolutions per second, frequency is n, about a point on its rim perpendicular to the plane of the loop. Okay, so this is the ring and this is the axis of rotation. ये है axis of rotation. तो क्या पूछा है? Because the word is about a point on the rim circumference and perpendicular to the plane, rotational kinetic energy पूछी है. ओके, बड़े गौर से देखिएगा. rotational kinetic energy will be equal to half of I omega square, that is half of, ring है और गौर से समझिएगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन मुझे ढूंढना है. यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है, वो कितना है? एम आर स्क्वायर. यहाँ का ढूंढना है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस से, वो कितना आएगा? वो आएगा 2mr स्क्वायर. सो दिस विल बी इनटू 2mr स्क्वायर और ओमेगा के जगह आएगा 2 पाई n द होल स्क्वायर. दिस गेट्स कैंसिल्ड. 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर m इंटू आर स्क्वायर इज द आंसर. कैसे आया ये भी देखो, कुछ अलग डायग्राम से भी समझा रहा हूं. वही चीज, ये अपना रिंग है और ये उसका सेंट्रल एक्सिस है. यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर. यहाँ का मुझे ढूंढना है. सो ये आ गया IC, ये आ गया I0 विच इज इक्वल टू IC प्लस m इंटू h स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस इज h विच इज इक्वल टू r in this case. So it is mr square plus mr square. The answer is 2 times mr square, जो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. लेकिन भाई देखते हैं ये आंसर है क्या ऑप्शन में. क्वेश्चन नंबर 9. 4 पाई स्क्वायर mr square, 4 पाई स्क्वायर mr square into n square. Yes, we have got that answer. The correct option is C. शुरू करते हैं आज के 10वें सवाल के साथ. क्वेश्चन नंबर 10. कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 10? हाँ है. If the angular momentum is increased by 50%, angular momentum को 50% बढ़ा दो तो काइनेटिक एनर्जी कितने प्रतिशत बढ़ेगी? बड़े गौर से देखिएगा. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज हाफ ऑफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई.
L square upon 2I is kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी क्या किसको बढ़ा दिया 50%, एंगुलर मोमेंटम को 50% बढ़ा दिया. सो L1 अगर 100 है तो L2 हो जाएगा, L1 अगर 100 है तो L2 हो जाएगा 50% बढ़ा दिया यानी वो हो जाएगा 150. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर 100 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. सो सिंपल, द आंसर इज kinetic energy 2 upon kinetic energy 1 is L2 का स्क्वायर, I कांस्टेंट ले लिया, अपॉन L1 का स्क्वायर. kinetic energy 2 is equal to 100 into 150 upon 100 का स्क्वायर, that is 100 into 3 by 2 का स्क्वायर, that is 100 into 9 upon 4, that is 900 upon 4, that is 225 I think, that is 900 upon 4, 225 आ रहा है वो, 225 पहले 100 था उसका 225 हो गया, तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 125% चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 into 100, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन परसेंट. सो इट इज 225 minus 100 अपॉन 100 into 100, ये कट हो जाएगा, 125% इज द आंसर. है क्या ऑप्शन? यस, 125% है ऑप्शन सी. 125% जो है दैट इज ऑप्शन सी. इसी के साथ हमारे ये 10 सवालों का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है. आशा करते हैं कि आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आई है. कल मिलेंगे और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ. अक्सर सीईटी या जेईई में ऐसे ही सवाल आते हैं. थैंक यू सो मच गाइस एंड गर्ल्स एंड हैव अ ग्रेट